हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आर के इंस्टीट्यूट एजुकेशनल चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए ऑन किलिंग ए ट्री, जो कविता क्लास 12 के सिलेबस में है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगले साल आयोजित होने वाले क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे लाभ मिलेगा। Question number 1. Give the substance of the poem on killing a tree. आंसर आप लोग लिखेंगे, In the poem on killing a tree, Guy Patel says that it is not an easy task to kill a tree. It cannot be done by a simple jab of knife. A tree grows slowly by consuming the earth's nutrients. It absorbs sunlight, air, and water for years. So it cannot be killed by hacking and chopping. It causes pain, but the tree does not die. Its bleeding bark heals itself. From close to the ground, its trunk produces twigs and small branches. If they are left unchecked, they will expand to the former size. If a tree is to be killed, the roots of the tree must be pulled out from the earth cave. After uprooting, it is scorched and choked in sun and air. Then it goes through a process of browning, hardening, twisting and withering. Ultimately, the tree is killed. तो इस प्रकार से आप अगर आंसर लिखते हैं इस क्वेश्चन का, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। एक चीज़ बस यहाँ रेक्टिफाई करने का है, इट दे आर लेफ्ट अनचेक्ड लिखा हुआ है, यहाँ इट के जगह पे आप लोग इफ़ लिखेंगे, IF इफ़। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम ऑन किलिंग ए ट्री। इस कविता का जो शीर्षक है, जो टाइटल है ऑन किलिंग ए ट्री, ये कितना न्याय संगत है, कितना जस्टिफाई है, वो हमें करना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, द टाइटल ऑन किलिंग ए ट्री इज़ ए आयरोनिकल। द ट्री हैज़ बीन पर्सोनिफाइड बाय द पोइट गाय पटेल। ए ट्री इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड, but men are destroying them recklessly. In the beginning of the poem, the poet describes how a tree grows up and becomes stronger. As a simple jab or hacking and chopping cannot kill a tree, the poet has described the whole method to kill a tree. The roots of the tree are pulled out of the anchoring earth, then it is exposed to the sunlight and air for scorching and choking. The act of killing a tree becomes complete when the tree becomes completely withered. The poet ironically points out man's cruel nature towards tree. He supports afforestation and dispraises the act of killing a tree. Thus, the title of the poem is appropriate and justified. चलिए ये भी आंसर हो गया। Let's we see the question number 3. How can a tree be killed on killing a tree? On killing a tree जो कविता है, उस कविता के अनुसार एक पेड़ को किस तरह से मारा जा सकता है, या हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब्स द मेथड्स ऑफ किलिंग ए ट्री इन द पोएम ऑन किलिंग ए ट्री। ऑन किलिंग ए ट्री कविता में कवि ने एक पेड़ को मारने के कौन से उपाय बतलाए हैं, किस तरीके से पेड़ को मारा जा सकता है। आंसर होगा, इन द पोएम ऑन किलिंग ए ट्री द पोएट गाइव पटेल डिस्क्राइब्स हाउ ए ट्री इज़ tortured by man for complete destruction. He says that killing a tree is a difficult task because a tree grows slowly by consuming
the earth and absorbing sunlight and air. It cannot be done by a simple jab of knife. A tree cannot be killed even by hacking and chopping. The bleeding bark of the tree will heal itself. Its roots are firmly fixed in the anchoring earth. So, in order to kill a tree, it must be uprooted. It is to be roped, tied, and pulled out from the earth cave. After uprooting, the root is to be exposed to sunlight and air for scorching and choking. Then it goes through a process of browning, hardening, twisting, and withering. Thus the tree is killed completely. तो इस तरह से इस सवाल के जवाब में पोइट पूरी प्रक्रिया को बतलाते हैं कि किस तरह से एक पेड़ को मारा जा सकता है, जो कि एक कटाक्ष है, एक आयरनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ द ट्री इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। ऑन किलिंग ए ट्री कविता के जो पहले स्टैंजा है, उस पहले स्टैंजा में किस तरह से कवि ने बतलाया है कि एक पेड़ कैसे एक छोटे से पौधे से वह पेड़ बनता है, उस पूरी प्रक्रिया को हम देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम ऑन किलिंग ए ट्री, द पोइट गाइव पटेल डिस्क्राइब्स द ग्रोथ ऑफ अ ट्री। ही सेज दैट द सीड ऑफ अ ट्री germinates under the soil. The little plant gets its nutrients from the earth. It grows very slowly. Then it absorbs sunlight, water, and air for many years. The bark of the tree looks ugly because it is rough and has crooked lines on it. It is very ironical that soft and green leaves come out of the leprous hide. Gradually it grows into a big tree. So this is the answer for question number 4. Now we are moving to question number 5. Question number 5 में देखते हैं, give the central idea of the poem on killing a tree. On killing a tree कविता का जो मूल आइडिया है वो क्या है, देखते हैं। The poem on killing a tree presents the true love of the poet for nature. It shows Guy Patel's deep concern for indiscriminate felling of trees. The tree consumes nutrients from the earth and absorbs sunlight, water, and air for years. Thus the tree grows slowly. The tree is the best gift of nature for all of us, but it has to suffer a lot because of man's cruel nature. It is killed with cruelty. Hacking and chopping do not kill it. It bleeds and feels pain, then nourishes itself. It produces new twigs and develops into a big tree again, but it has to surrender at last to man's selfish greed when it is uprooted. Thus the poem focuses on the irony of the killing a benefactor tree by its beneficiary man. तो इस तरह से इस कविता को हम लोग देख लेते हैं कि ये पूरा एक आयरोनिकल पोएम है, जहाँ ये दिखलाया गया है कि जो कि हमारा बेनिफैक्टर है, एक ट्री हमारा बेनिफैक्टर है, उससे हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन उससे हमें लाभ मिलने के बावजूद भी मनुष्य क्या करते हैं कि हम पेड़ पौधों को काट देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। वाई डज इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। ये एक पंक्ति कविता से लिया गया है, इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। तो इस पंक्ति पे आधारित एक क्वेश्चन है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लाइन द क्वेश्चन इज दैट व्हाई डज इट टेक मच टाइम टू किल ए ट्री। एक पेड़ को मारने में हमें बहुत अधिक समय और मेहनत लगती है, क्यों। हाउ इज़ द ट्री फाइनली किल्ड, और अंततः किस तरह से एक पेड़ को मार दिया जाता है।
है ना. All these are very important questions. Many times this question has been repeated in the board exams. So this question is very important. The answer for this question is, killing a tree is not an easy task. It takes much time and effort to kill a tree because for its existence, the tree absorbs water and minerals from beneath the earth. The tree grows slowly by consuming the earth's nutrients. It absorbs sunlight, air, and water for years. So it cannot be killed by hacking and chopping only. Hacking and chopping may cause pain, but the tree does not die. Its bleeding bark heals itself. From close to the ground, its trunk produces twigs and small branches. If they are left unchecked, they will expand to the former size. To kill a tree, the roots of the tree must be pulled out from the earth cave. After uprooting, it is scorched and choked in sun and air. Then it goes through a process of browning, hardening, twisting, and withering. Ultimately, the tree is killed. So, in this way, the two questions has been answered in this single answer. ये क्वेश्चन 2 पैराग्राफ में इसका आंसर है. जो पहला क्वेश्चन, वाई डज इट टेक सो मच टाइम टू किल ए ट्री, इसका आंसर हो गया. और उसके बाद हाउ इज़ द ट्री फाइनली किल्ड, वो सेकेंड पैराग्राफ में. So dear students, in this class I have provided you 6 long answers for the poem on killing a tree for the students of class 12 West Bengal Council of Higher Secondary Education. तो चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें. आगे मैं इसी तरह से आप लोगों को बाकी सारे चैप्टर्स, शॉर्ट स्टोरीज़ और पोएम्स के ऊपर भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करता रहूँगा. थैंक्स फॉर